I think some of you already have coffee can investing with you. For those who don't have coffee can investing, कुछ brief numbers में देता हूँ, some big numbers, right? Our country's economy, इंडिया का इकोनॉमी करीबन $3.5 ट्रिलियन है, $3.5 ट्रिलियन. और इंडिया के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप, द कंट्री स्टॉक मार्केट इज वर्थ अराउंड $3.5 ट्रिलियन, राइट? बट द रिमार्केबल फैक्ट इन दिस इज, out of this $3.5 trillion of market cap, $2 trillion have been created in the last 10 years, right? So, एक दशक में हमने $2 trillion of wealth बनाई है इस स्टॉक मार्केट में. Now, उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात क्या है? Out of this $2 trillion of wealth, 80%, मतलब 1.6 trillion has come from 20 companies. केवल 20 कंपनी ने 2 ट्रिलियन में से 80%, $1.6 trillion कमा के दिया है, ठीक है? These 20 companies, as you would expect, are household names, right? HDFC Bank, TCS, Infosys, Bajaj Finance, Asian Paints, Titan, ICICI Bank. These are companies everybody is familiar with, right? Now, out of the 20, there are 2 slightly naughty companies. उनके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. आपको पता है 20 massive wealth generators जो हैं, उसमें से slightly naughty ones कौन है? But 18 out of 20, the 20 massive wealth creators जिन्होंने देश का 80% पैसा बना के दिया है, 20 में से 18 are clean, well-run companies whose products you and I use. I'm sure many of our relatives work in these companies, right? Now, the remarkable thing is this. We ourselves are customers of these companies. These companies are compounding wealth for us, right? Result is, ये वाला chart. So, what I've done in one slide is shown you the world's 20 largest stock markets. Right, these are the world's 20 largest. These are the world's 20 largest stock markets. And अगर आप इंडिया का performance देखो, say take the 20-year performance, right? Over the last 20 years, the Indian stock market has delivered in dollar terms. These are all dollar returns, by the way. And dollar terms में इंडिया के stock market ने करीबन 14.5% दिया है. I created this slide 6 months ago. अगर अभी बुल मार्केट का इफेक्ट ले, so over 20 years, the Indian stock market is the second best performing market in the world. 14.5% कमा के दिया है. And why is that? Because you've had 20 giant companies creating colossal wealth in front of you and me. ठीक है? Now, the interesting part in this is as follows. विदेशी निवेशक तो आ रहा है, इंडिया में निवेश कर रहा है. But if you speak to a typical Indian household, आप इंदौर में करो या बॉम्बे में करो या दिल्ली में करो, you speak to a typical Indian household, उनका 80-90% वेल्थ होगा रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा तो फिक्स डिपॉजिट होगा. barely 5%, maybe 10% of their wealth will be in the stock market. And that's in spite of the fact that कोई नई बात नहीं है, over 10 years, 20 years, 30 years, India's stock market has been amongst the best performing markets in the world. And as I discussed, right, most of the companies that have made massive wealth, trillions of dollars of wealth, are companies well known to you and me, right? So I keep thinking, why does this happen, right? Why is it that we in our own country underinvest in our own market, whereas investors from America, Canada come and buy huge chunks of our companies? HDFC Bank, for instance, HDFC Bank is owned 75% by foreign investors, right? So हमारे देश के सबसे जो वैल्यूएबल कंपनीज हैं, उसको FII अच्छे से खरीद लेता है, और हम लोग आइदर प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं या किसी स्मॉल कैप के पीछे भाग रहे होते हैं, right? Why is that, right? There's a bunch of reasons for it. So I'll keep it brief because in the interest of time, आप लोगों ने भी काफी वेट किया है, and I'll try to make it interactive so that आपको भी थोड़ा मजा आए. किस लिए हमारे देश के लोग, मतलब आप, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, हमारे क्लाइंट, आपके मित्र, क्यों वो स्टॉक मार्केट में अंडर इन्वेस्ट करते हैं और दबा के रियल एस्टेट खरीदते हैं? आपके शहर में रियल एस्टेट चला है, बॉम्बे में रियल एस्टेट का 10-year रिटर्न है 0, राइट? मोस्ट ऑफ द कंट्री में रियल एस्टेट का 10-year रिटर्न है 0, फिर भी लोग फ्लैट खरीदते हैं मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में. क्यों खरीदते हैं, राइट? वाई डू वी नॉट बाय इनटू आवर ओन बूमिंग स्टॉक मार्केट? सो आई स्टार्ट विद अ कंपनी व्हिच आई थिंक एपिटोमाइजेस बोथ हमारी किताब और हमारे देश की मानसिकता, राइट? सो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा. एनीबडी वांट्स टू ब्लर्ट आउट द आंसर, फील फ्री. टुडे इन इंडिया, one company accounts for 10% of the nation's profit, right? Well-known company, the largest profit generator in India, it accounts for 10% of the nation's profit. What's the name of that company? Anybody? Haji?
नहीं, ना टाटा नहीं, रिलायंस नहीं, SBI नहीं, HDFC बैंक. HDFC जुड़ गया, right? So they haven't yet published consolidated results from HDFC Bank, and HDFC Limited will come in September, right? जब वो जोड़ के रिजल्ट आएगा, you will see one company will account for 12-13% of India's profits, right? Because वो simple सा चीज़ है, you just take HDFC का profit, take HDFC बैंक का profit, जोड़ दीजिए, 12-13% इंडिया की कमाई एक कंपनी से आएगी, ठीक है? Bigger than Reliance, bigger than SBI, bigger than TCS. Now the interesting thing is this: if I ask you what's the name of the HDFC Bank CEO, right? And I ask my clients typically this, half the people will mention the great Aditya Puri ji, who retired 5 years ago. The other half will mention the great Deepak Parekh, icon of Indian finance, but वो कभी HDFC Bank के CEO नहीं रहे थे. HDFC Bank के CEO का नाम है, anybody wants to volunteer? The country's largest profit generator. एक कंपनी जो 95 से अब तक प्रॉफिट कंपाउंडिंग 95 से अब तक चलती आई है, करीबन 22-23%. लास्ट 5 साल में भी 22-23%, बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. HDFC बैंक के CEO का नाम. इफ आई आस्क्ड यू JP Morgan के CEO का नाम, JP Morgan के CEO का नाम जेमी डायमंड, बढ़िया. टेस्ला के CEO का नाम, राइट? माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम. अब हमारी कंपनी, हमारे देश के सबसे बड़े प्रॉफिट जनरेटर का नाम, उनके CEO का नाम है शशि जगदीशन, राइट?